little comma to your material activities. After 6 days continuously, when you're working for making your senses satisfied, then you tend to get tired. माया वशभूत जीव जब पूरा 6 दिन सुबह से शाम तक काम करता रहता है, तो 7वें दिन जब उसको थोड़ी राहत मिलती है, तो उसको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आनंद है। उस आनंद के अंतर्गत परमानंद की प्राप्ति करने के लिए आप यहां पर बैठे हुए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। Isn't it? क्योंकि उस आनंद में भी तृप्ति नहीं होती जिसको आप आनंद समझ बैठे हैं। यस नो? असली आनंद है कि जब हम ठाकुर जी के चरणों में, भक्तों के संग में, भागवत के आश्रय में, भक्तों गुरु के आश्रय में रह के जब भक्ति करेंगे, तो हम इस संसार में होते हुए भी संसार से निर्लिप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए सबका धन्यवाद, महिलाओं का भी, पुत्रियों का भी धन्यवाद, जो प्रातः के किचन के एंगेजमेंट को छोड़ के कृष्ण भावना संघ के प्रसंग में आ गए, उनका भी धन्यवाद। नहीं तो बच्चों की डिमांड, हस्बैंड की डिमांड, आज संडे है, कुछ अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, तो माता बेचारे संडे के दिन भी बिजी रहती हैं। उनको कभी छुट्टी मिलती नहीं है। इसीलिए भौतिक संसार में आजकल माओं को बड़ा प्रेज करते हैं। तो एक ही व्यक्ति है जिसको छुट्टी नहीं मिलता है, पगार नहीं मिलता है, isn't it? और फिर भी हम लोग भौतिक संसार के कलमश में आते हुए हम यही सोचते हैं कि माँ को कब ओल्ड एज होम भेज देंगे, अब तो हमारी धर्मपत्नी आ गई है। तो ऐसी चेतना और ऐसा विकास किसी काम का नहीं। ऐसी प्रगतिशील जीव चर्या जो है, जीवन की चर्या जो है, किसी काम की नहीं। चाहे वो भौतिक लैंग्वेज या भौतिक एजुकेशन के प्राप्त भले ही क्यों न हुई हो, वो ये कॉन्शियसनेस पूरा शास्त्र और संत लोग उसका तिरस्कार करते हैं। इसीलिए मंदिर का निर्माण होता है ताकि हम जीवों के असली निर्माण में सक्षम हो सकें और आगे बढ़ सकें। So thank you very much for coming this morning for the Bhagavatam class. So I would like to give instructions to those people who are coming to the temple. Number 1, जितने भी भक्त हैं अपने जूते स्थान में रखा करें। मैं जानता हूं कि आपके चरण बहुत ही नाजुक होते हैं, तो आप चाहेंगे कि इस धार तक चप्पल में आके बैठें। तो वो भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसको नंगे पांव भगवान के मंदिर में आना चाहिए। अपने पांव की चिंता मत कीजिए। हमारे टेंपल कमांडर साहब मंदिर को साफ करने की बड़ी चेष्टा करते हैं।
भले ही कंस्ट्रक्शन है, फिर भी हम लोग बहुत सा मंदिर का परिसर साफ रखते हैं। कभी भी चप्पल को, जहां पर लिखा हुआ है बोर्ड में नो शूज अलाउड, अपना चल के आइए, और यहां पर नंगे पांव आइए। हो सके तो घर से नंगे पांव आइए, तो आपकी भगवत भक्ति में और भक्ति वैराग्य में वृद्धि होगी। ये नंबर 1 इंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुने उसको। जब भी हम गुरु पूजा के बाद में कीर्तन करते हैं सभी भक्त लोग, उसी के टाइम पे आपको परिक्रमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम पे सभी महिलाएं हैं, प्रभु लोग हैं, जो भी लीड कर रहा हूं उसके साथ में कीर्तन करें, क्योंकि उस कीर्तन में स्वयं साक्षात मदन मोहन जी नाचते हैं। अगर आप अपने शरीरी स्तर को छोड़ देंगे तो और केवल नाम संकीर्तन करेंगे तो साक्षात भगवान आपके साथ नृत्य करेंगे। कभी भी मंदिर में आके, इस परिसर में बैठ के कभी भी भौतिक चर्चा ना करें। ऐसी बुद्धि को किसी के चप्पल से पछाड़ दो। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप गुरुद्वारे चले जाओ और वहां के सब चप्पलों को साफ करें। उनका एटलीस्ट ये है कि हर चप्पल को वो साफ करते हैं, इसलिए बड़े नम्र बन जाते हैं। तो आपसे ये निवेदन है, आपसे ये अपेक्षा है कि मंदिर के परिसर में आप कभी भी बातें नहीं करें। भगवान की समक्ष में खड़े हैं तो दर्शन कीजिए, बड़े शांति से, बड़े प्रेम से। अपने बच्चों को भी वैसे संस्कार दें कि मंदिर जाना है, शांत रह के जाना है, चिल्लाना मत वहां पर, रोना मत चॉकलेट के लिए। अपने बच्चे को हिदायत दे के, इंस्ट्रक्शन दे के लाइए मंदिर। हम मंदिर जा रहे हैं, स्नान करके जाना है, साफ कपड़े पहनना है, क्योंकि आप भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। जब बॉस से मिलने जाते हैं तो कपड़े पे लगा के जाते हैं। जब गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं चौपाटी में तो एकदम बाल बाल एकदम रंग के जाते हैं। जब मंदिर में ही आते हैं तो क्यों सब चलेगा? हाँ, क्यों चलेगा ऐसा? भगवान के मंदिर में भी साफ कपड़े पहन के आए। दाढ़ी बढ़ा के आ जाइए, आने की जरूरत नहीं है। मजनू बन के नहीं आना है। मर गया हूं, भगवान मुझको कुछ कर ले। हाँ, उत्साहित से भगवान के दर्शन करने। तुम्हारी खोपड़ी इतनी विस्तृत नहीं होगी कि तुम समझ सकोगे कि विग्रह का क्या मतलब है। तुम अधम हो, मूर्ख हो, ज्ञान वैराग्य भक्ति से वंचित हो। आने के बाद कुछ ललासा रखो कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं बड़े प्रेम से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
वर्तमान स्थिति में बीमारियां हो चुकी हैं, कई बीमारियां आ गई हैं और नई बीमारी आ गई। जिनको लगता है कि ये बीमारी नहीं है, उनको बताना चाहता हूं, ये मोबाइल की बीमारी आपके भेजे को चाट देगी, गर्दन में बल पड़ जाएगा। प्रणाम करके संतों के प्रणाम करते हुए शरीर में बल आ जाए वो चलेगा, मगर मोबाइल को लेते 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 अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दो कि वो अच्छा नहीं है। और मंदिर में जब बैठे रहते हो, साधु की वाणी सुनना चाहते हो, शास्त्र की वाणी सुनना चाहते हो, तो यहां पर नोटिस लिखी हुई है मेरे सर के ऊपर पीछे, मोबाइल बंद रखना। जब मोबाइल बंद होगा तब जाके तुम्हारी चेतना कृष्ण में 100% होगी। नहीं तो शरीर से मेरे सामने बैठोगे मगर चेतना में घूम रहा होगा कि मेरा पतिदेव कहाँ होगा, मेरा बच्चा किधर होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा। फिजिकल बॉडी तो यहां पर है मगर अंदर की बॉडी कहीं दूसरी जगह पहुंच गई, मन कहीं पहुंच गया होगा। तो ऐसा कभी मत करो। जब मंदिर से मन आना है तो सब कनेक्शन तोड़ के आ जाओ और अपने इस कनेक्शन में जोड़ने के लिए आतुर हो जाओ। जितना बल है उतना भगवत प्राप्ति करने के लिए लगाओ। तुम्हारे पास आधा घंटा है, 1 घंटा है, पूरा संडे है, लगा दो पूरा उसमें, और उसके साथ में कनेक्शन मत रखो। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसा निस्वार्थ सेवा को मन हो तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अवश्य तुम्हारे जीवन तुम्हारे कुटुंब की रक्षा करेगा। क्योंकि भगवान जो है तुम्हारे कहने से भगवान नहीं है, या तुम्हारे न मानने से वो भगवान बन जाएंगे या ना बन जाएंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है। ये ध्यान से रखो आप। तो इसलिए प्रयास कीजिए, अपने कल्चर को बजाए रखिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। हिंदू जाति लोग अपने जीवन में हेल्प कीजिए लोगों को। जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उसको पकड़ो, डांटो, संभालो, समझाओ। केवल अर्थ प्रधान सोसाइटी मत बनाओ, संस्कार प्रधान सोसाइटी बनाओ। जब तक संस्कार प्रधान सोसाइटी नहीं होगा तो संसार सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाइए। ये एक जीवन आपको मिला है और इस जीवन में भी ये ध्यान हो चुका है कि आपके माथे पे तिलक होना चाहिए, आपके जीवन में शास्त्र होना चाहिए, गुरु का आश्रय होना चाहिए। तो उसको पकड़े रहो, कभी भी जाने मत दो। तो आइए मिलके कीर्तन करते हैं। मैं भी अपने जीवन को सुधारूं और आपके साथ बैठ के सुधारूं तो बहुत ही अच्छा। और कलयुग में कीर्तन सबसे बड़ा प्रदान है और इसको बड़े प्रेम से हमें करना है। भूल जाना है हम कहाँ हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, जिताय गौर सुंदर भगवान की, गौर प्रेमानंदे।
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनंदन यशोदानंदन व्रजनंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तीरावनचारी
यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय गौरानी जय गौरानी गौरा 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 हरे। Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada,
Jai Ushabad Paramasubhacharya Sutra Sat, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Liberty Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prems Oho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar, Shivas Adi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopinath, Radha Kunsham Giri Govardhana Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Dwarka Dham Ki Jai. Rameshwar Badrinath Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai. Mayapur Navdeep Dham Ki Jai. Ganga Mai Jamna Mai Ki Jai. Vrindadev Tulsi Maharani Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जाय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जाय। श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की जाय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल प्रसाद वितरण प्रोग्राम की जाय। हरिनाम संकीर्तन की जाय। इस्कॉन खारगर की जाय। इस्कॉन खारगर भक्त वृंद की जाय। समस्त वैष्णव भक्तों की जाय। गौर प्रेमानंदे, गौर प्रेमानंदे, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। So we are reading this morning from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 1, and the verse number is 23. 22 has no purport, so I will try to read that Sloka and then we'll try to go for 23rd reading. Okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Though I have no qualification to sit on this Vyasasana, but I am thankful to Prabhupada. I am thankful to my spiritual master who has engaged me in my service, in the service of the Lord and the Vaishnavas. It is because of the Guru Kripa that I am able to sit and talk to you about the Bhagavatam. Though I am not really qualified to give you the best of the Bhagavatam, but still, while I'm fumbling, while I'm trying to endeavor to please my Guru and Krishna, whatever is coming from my core of heart, hope that will benefit you for the progress of your spiritual life. Without the mercy of a Guru and without the mercy of the Vaishnavas, one cannot cross over this ocean of nescience. That's why Lord Krishna has been very, very kind to us. Vyasudev has been very kind to us, that he has given us this Srimad Bhagavatam, which fills the gap and separation from Krishna. And one who is seeker of the real shelter of Krishna, he must read Srimad Bhagavatam daily so that he can connect himself with Krishna consciousness and Krishna all the time. That's why all over the world, all over the globe, wherever ISKCON centers are there, we read Nityam Bhagavata Sevaya. We serve Bhagavatam daily, thus enabling ISKCON to dissipate the darkness all over the globe and connect people towards Krishna consciousness. Because of the great Acharya and because of the great disciples of Srila Prabhupada, who tirelessly served after Srila Prabhupada left the planet, forgetting their own comforts, forgetting their own comfortable situations, they carried the baton left by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and they carried this baton of Krishna consciousness so that we can make this world livable and peaceful. So that's why Srimad Bhagavatam is very, very important for all of us. हम सभी के लिए श्रीमद् भागवतम अध्ययन
बहुत अनिवार्य है। जब तक हम भागवत का अध्ययन नहीं करेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, जो कुछ भी कर रहे हैं आप। श्रीभद्रायनेरुवाच रजनस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषि तुष्टः परातम अभ्यासो शृण्वतस्य तद सदा कथा. Sri Sukdev Goswami said, after hearing the request of Maharaja Yudhishthir, Narada Muni, the most powerful spiritual master, who knew everything, was very pleased. Thus he replied in the presence of everyone taking part in the yajna. Now we come to this verse number 23. Shri Narada Vacha Nindana Sattva Satkara Nyakarartham Kalevaram Pradhana Parayo Rajan Avivikena Kalpita Avivikena Kalpita. Shri Narada Vacha Nindana Sattva Satkara Nyakarartham Kalevaram Pradhana Prayo Rajan Avivikena Kalpitam. Shri Narada Vacha Nindana Sattva Satkara Nyakartham Kalevaram Pradhana Parayo Raja Avivikena Kalpita.
Ma- mothers, word to word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Shri Narada Vacha. Shri Narada Muni said, Nindana, blasphemy. Satava, praise. Satkara, honor. Nyakakara, dishonor. Artham, for the purpose of. Kalevaram, body. Pradhana, pradhana pariyo, of nature and the Supreme Personality of Godhead. Rajan, O king, avivikena, without discrimination, kalpitam, created. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The great sage Sri Narada said, O king, blasphemy and praise, chastisement and respect are experienced because of ignorance.
The body of the conditioned soul is planned by the Lord for suffering in the material world through the agency of the external energy. Kindly repeat it after me. The great sage Sri Narada said, O king, blasphemy and praise, chastisement and respect are experienced because of ignorance. The body of the conditioned soul is planned by the Lord for the suffering in the material world through the agency of the external energy. जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता उनके लिए मैं हिंदी का रूपांतर भी पढ़ूंगा और फिर बाद में जब परपट होगा उसके बाद में इंग्लिश दोनों साथ में चलते रहेंगे। ध्यान से सुने, अपना मन लगा के सुने, तभी जाके थोड़ा सा विकास हो सकता है। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. In the Bhagavad Gita, chapter number 18, the verse number 61, it is said, Ishvara sarva bhutanam iddeshu arjuna tishtati brahmanayan sarva bhutani yantra rudani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wandering of all the living entities who are seated as on a machine made of material energy. A material body is manufactured by the external energy according to the direction of the Supreme Personality of Godhead. The conditioned soul, being seated on this machine, wanders throughout the universe, and because of his bodily conception of life, he only suffers. Actually, the suffering of being blasphemed and the enjoyment of being praised, the acceptance of good welcome or of chastisement by harsh words are felt in the material conception of life. But since the body of the Supreme Personality of Godhead is not material, but it is Satchidananda Vigraha, he is unaffected by insults or greetings, blasphemy or prayers. Being always unaffected and complete, he does not feel extra pleasure when offered nice prayers by the devotees. Although the devotee benefits by offering prayers to the Lord, indeed the Lord is very kind to his so-called enemy, because one who always thinks of the personality of Godhead as an enemy also benefits. Although he thinks of the Lord adversely, if a conditioned soul thinking of the Lord as an enemy or a friend, somehow or the other becomes attached to the Lord, he received great benefit. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmitam Yenahi Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar
Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Mahabhadanyaya, Krishna Prema Padayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namane, Gaur Tuse Namah. Namo Brahmane Devaya, Go Brahmahitaya Cha, Jagatitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu, Deenabandhu Jagatpate, Gopesh Gopika Kant Radha Kantu Namostute. Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpadruvasya kripa sindhuvacha patithanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Punah, welcome to all the devotees who are here sitting in this prangan of Radha Madan Mohanji. Thank you very much. From the past many days we have been hearing this wonderful topic, and this topic and this chapter is called The Supreme Lord is Equal to Everyone. So under these situations we are hearing this wonderful, jigyasa of inquisitiveness and the questions coming from Yudhishthira Maharaj, Dharmaraj. And he's putting these questions to Narada, the great spiritual master, because without approaching a spiritual master, we cannot dissipate our ignorance. We cannot eradicate ignorance. Even if we try to go to the big colleges, big universities, Oxford University, Stanford University, you will not be able to understand your constitutional position. That's why the great sages in the past and the great sages in present situations, they're all seeking and sheltering themselves under the divine personality, guru, spiritual master, so that they can get connected with Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and the only Supreme Father. So, we see here a true seeker who is called Dharmaraj Yudhishthira. Dharmaraj Yudhishthira. Sabhi dharmon ki gyata, sab dharmon, sab dhyan, sab everything he was possessing. But yet he is clarifying his question by approaching a great transcendentalist. Because it is said, he says, Aho ati adbhutam hi etad durlabhai kantitam api vasudeva pare tatve praptis chaidasya vidvisa. This is his question. What is his question? It is very wonderful that the demon Shishupal merged in the body of the Supreme Personality of Godhead, even though extremely envious. This Sayuja Mukti is impossible to attain even for great transcendentalists. How then did the enemy of the Lord attain it? How is it possible that the Shishupal has entered, merged with the body of Krishna? In spite of him, from his childhood, he was a very blasphemous towards the Supreme Personality of Godhead. It's a very apt question by a Dharmaraj.
So then it is said that what is the cause of that mercy for Shishupala to get this type of a mukti? And then Prabhupada ji is telling us in the purports, we have heard that Vena going to hell. And how come Shishupala is the something different? Isn't it? And then we have seen that devotees have said, let Shishupala go to the hell. Isn't it? And he went to the hell. How come Shishupala is very different? So Prabhupada is saying that he was bachpan se hi Krishna ko ulta pulta bolte. And then he remained the enemy of Krishna till death. 24 into 7 into 365 days into lifetime. If you become an enemy of Krishna, how that Krishna is so merciful to Shishupala, and we are here in this material world suffering for seeking the shelter of Krishna. And I'm trying to think of chanting the holy name of the Lord all the time. I'm saying, oh Lord, I'm doing so much. Oh Lord, I'm bringing Sawa Rupe ka prasad every day to Radha Madan Mohan ji, and what? I am suffering so much pain. ऐसा क्यों है? Shishupal and Dantavakra, Prabhupada ji says, they were not ordinary people. Mind this. Correct, sir? They were not ordinary people. What happens when you have little problem with the eyes? Put some water. Sometimes प्रसंगों के बीच में ही हमारे आंखों के जो lids हैं बड़े भारी हो जाते. तो बाहर के कभी कभी लोग जो है ना, वो अपने हाथ में वो वाटर गन रखते हैं, तो उसको ढाल देते. तो मगर यहाँ पर तो हम लोग वाटर गन तो रख नहीं सकते, तो हम लोग ऐसा कटोरी में दे सकते हैं ताकि आप आंखों के साथ में इसको लगा दें और आपकी आंखों के जो लिड्स हैं तरोताजा हो जाए. Isn't it? है कि नहीं? या तो अगर बोल्ड हैं आप, तो अपने आप को थप्पड़ मारिए ताकि दूसरे लोग भी सुने उसकी आवाज, हाँ, कि भाई किसी ने थप्पड़ मारा, तो दूसरा जाग सकता है. अपने को थप्पड़ लगा के दूसरा का अगर सत्कार हो जाता है, उसका कुछ अच्छा हो जाता तो अच्छा है ना. Isn't it? So it's always good. So here, please keep on waking up and don't sleep, okay? So because otherwise, if I will also sleep by seeing you sleeping, what will happen? The purpose will be missed. Isn't it? So till his death he was against him, but you must know that these two people were not ordinary, they were gatekeepers. They were gatekeepers of the Supreme Lord in the Vaikuntha. They had a privilege. And while having that privilege, they couldn't behave properly with some pure devotees. And these pure devotees were none other than 4 Kumaras. They were brahmacharis from the young age, wanting to go back to the Lord, see where is he? We want to have darshan. And they did it because of the mercy of Tulsi Maharani. They did it just smelling. हम लोगों को महका मालूम नहीं.
केवल तुलसी दल को पकड़ के भगवत धाम जा सकते भाई। So that is the potency. That is the potency of the secretary Tulsi Maharani. You have to take care of Tulsi Maharani very, very nicely. In any temple, wherever Tulsi Maharani is taken care of very nicely, the devotees take care of very nicely, the temple is flourishing like anything. So they went and they offended these people, these 4 Kumaras. And what happened? The Lord had to come from inside. अरे कैसा गेट कीपर है ये लोग, हाँ, हमको भगवान से मिलने नहीं देते. If a gatekeeper, if a servant, if a devotee is not having perfect etiquettes, or a disciple has no etiquettes, you can defame your spiritual master. You have got so diksha, you have got everything, but are you understanding what is the importance of diksha? Are you understanding what is the importance of Guru Dharan? Or do you know what is the importance of chanting the holy name of the Lord? If it is not seeping into your consciousness, there's a possibility that till your death you will not understand the importance of a guru. And that is why the materialistic people cannot understand what is Guru Tattva. And they cannot attain the shelter of Lord at any given time because they are blasphemous. They are ignorant. There are so many things are there. But here you see that 4 Kumaras, they went and Lord said that you guys have done some mistake. Because 4 Kumaras are saying, अरे कैसा रखा आपने ये गेटकीपर? ओ हमको तो पूरा दरवाजा बंद कर दिया. हमको आपसे मिलना है और हमको जाने नहीं देता. और ऊपर से बोलता है यहां पर अंदर है नहीं, भगवान है नहीं. अंदर है, आप बोलता है नहीं. तो भगवान भी बोल दिया कि यार ये तो लफड़ा किया इसने. ये मेरा गेटकीपर, my gatekeeper did something wrong. Then, because of that error, Lord had to send them. 3 times you become demons, and 6 times you become devotees. What is your choice? पहला किधर जाएगा? भगवान को भी चॉइस देता है, जैसे हमको चॉइस दिया. भक्त बनना है कि मायावादी बनना है? प्रभुपाद जी बिगिनिंग में बताते हैं, मायावादी बनोगे तो कृष्ण के अपराधी बनोगे. भक्त बनोगे तो कृष्ण भी तुम्हारा गुणगान करेगा. चॉइस इज योर्स. यू वांट टू बिकम डीमन, 3 बार जन्म लेना पड़ेगा. और भक्त बनना है तो पूरा भागवत में भक्त प्रणाली बना हुआ है. उन्होंने बोला हम पहला गलत काम जो है ना वो जल्दी जल्दी निपटाएंगे. तो हम लोग क्या है, हम लोग राक्षस योनि में जाएंगे, प्रतिद्वंदी बनेंगे. तो 3 बार क्या हुआ, क्या क्या बने वो? हिरण्याक्ष एंड हिरण्याकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र. तो ये लास्ट उनका है. ऑलरेडी बन गए पहले. तो यहां पर देख रहे हैं Prabhupada ji is mentioning that these 2 people are not ordinary people.
They are enhancing the Leela of Lord. When you see the Bollywood movie, you see a villain, and then you see hero, isn't it? If the villain is very powerful, like Amrish Puri, then the hero, like Amitabh Bachchan, becomes very famous. Because if the opponent, his enemy is very strong, what happens? The hero's character also gets enhanced. So here in this Leela, we see Shishupal and Dantavakra became the demons, and they started doing all these things for the Lord. And the Lord is, and Lord will be always transcendental. Because he is not like you and me. Advaitam Achyutam Anadi Ananta Rupa Madhyam Purana Purusham Navayauvanam Cha. He's the oldest, he's the youngest. And he's all prevailing. And he's not influenced by Tamogun, Rajogun, and Satogun. He's transcended all these things. He is not material, he's completely spiritual. He's spiritual. From every angle he is spiritual. वो हमारे जैसे बुढ़े नहीं हो जाते, हमारे जैसे रिंकल्स नहीं आते हैं, सफेद बाल नहीं होता, रंगना नहीं पड़ता है, वो सदैव नवयौवन में रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब वो महाभारत के युद्ध में थे, उनकी आयु लगभग 125 वर्ष की थी, और ऐसे लग रहे थे कल बड़े सुंदर लगे रहे थे। So this is Krishna. But all the modern rascals, they think that Krishna is like them. I have 4 wives. He had 16,108 wives. You rascal, you cannot maintain one, but Krishna maintained 16,108, and there was no fight. You never had to fight. Go one to maintain in Dubai, and another to maintain in Delhi, and another to maintain in London. But Krishna, the Supreme Personality of Godhead, created all 16,108 palaces in Dwarka, and they were all in tune with each other. They were not like us. Krishna was not like us. Krishna is not like us. That is why Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Just because we think that he is Supreme Personality of Godhead, it is not like that only. All the great Mahajans, all the great sages understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And if we want to attain Krishna, the Supreme Personality of Godhead, we have to follow the Mahajanena Gata Supanta. We have to approach, we have to follow the great Mahajans. And we have to surrender to spiritual master. Tadvidi pranipatena paraprashnena sevya ubdakshantate jnanam jnanena tattvadarshan. When you do this, then only you will be able to transcend the modes of the material nature. Then only you will be understanding the Mahima of a Guru. Then only you will be understanding the Mahima of Krishna. Because without hearing the Mahima of Krishna from a bona fide spiritual master, you cannot become devotee. You may become materially motivated, you may become materially educated, you may become materially rich, you may have so many things, but you will not understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhaktya Mam Abhijanat. So, how Shishupala entered into the body of Krishna? And Prabhupada ji said, he entered into the body of Krishna for some time, but ultimately, he stayed as an individual in the abode of the Supreme Personality of God. Because when you become devotee of the Lord,
You are living in his abode, but in his transcendental service. That is the quality of a devotee. So, it is said, this thing happened in front of all the exalted Vaishnavas. And how did it happen? So Prabhupada is talking about in the previous verses, we said that they were doorkeepers, they were all that, they were doing this, and they had Sarupya, Salukya, and everything. Ultimately, they Sayuja Mukti. There are 5 kinds of muktis, and they received this Sayuja Mukti in their life. So Yudhishthira Maharaj says, I became disturbed. भक्त लोग जो ज्यादा भक्ति करते हैं, कभी किसी को ज्यादा महाप्रसाद मिल गया तो बोला, अरे उसको क्यों सूरदास प्रभु ने ज्यादा प्रसाद दिया, अरे मेरे को क्यों नहीं दिया भाई। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज का भी ऐसा हाल है। वो बोला, हाउ कम आई बिकेम डिस्टर्ब just as a flame of a candle is disturbed by a blowing wind. जिस तरीके से एक कमरे में जलता हुआ विक होता है, मोमबत्ती होता है, वो स्थिर तरीके से जलता है, मगर दरवाजा खोलो तो वहां से पवन आ जाता है, तो ये जो विक है डगमगाने लगता है। इसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे प्रसंग को सुनने के बाद उनका मन जो है डगमगाने लगा। ऐसा क्यों हो गया भाई? So Srila Prabhupada is talking in this verse now that when after hearing the request of the Maharaja Yudhishthira, Narada Muni, the most powerful spiritual master who knew everything, was very pleased. Thus he replies in the presence of everyone. जब भी आप कभी द्वंद्व में पड़ें तो स्वाभाविक है हमें गुरुवर के पास जाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु हैं आपके, चाहे वो दीक्षा गुरु हैं, आपको जाना चाहिए और अपने मन की उत्कंठा को शांत करना चाहिए। वही आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम प्रणाली है। अमृत पीने के लिए आप मैखाने में नहीं जा सकते, डॉक्टरी करने के लिए आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकते। इंजीनियर बनना होगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, और अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो कृष्ण क्या बोलते हैं? तद विधि प्रणिपाते न पर प्रश्ने न सेवया उपदिक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। तुम्हें तत्वदर्शिनी के पास जाना होगा, जिसने सच को पहचाना है, जिसने सच को जाना है, उसके पास जाना होगा। जिस तरीके से युधिष्ठिर धर्मराज, उनके हृदय में ये उत्कंठा पैदा हो गई, वो किसके पास गए? वो दुर्योधन के पास नहीं गए, वो किसके पास गए? नारद मुनि के पास। और भक्त जो है, नारद मुनि का कैरेक्टर क्या है? Everybody loves him. He goes in the demons, they also respect him. नारद जी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवताओं के बीच में चले जाते हैं, वो भी उनका सत्कार कर देते। भगवान जी के पास चले जाते हैं, वो भी बोलते हैं, नारद जी ऋषिवर कैसे आ गए यहां पर? This is devotee. We have to become devotees like this. We don't have to become kapti devotees. We don't have to become artificial devotees. We don't have to become hypocritical devotees. मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, ये सब भक्तों की परिभाषा नहीं है सर, ये परिभाषा नहीं है। अपनी शुद्धता को विकारों के अंतर्गत भ्रष्ट मत करो कि तू मेरा है, वो उसका है, ये इसका है, ये चौपाटी का है, ये जूहू का है, ये मीरा रोड का है, ये खारगर का है। ये रास्कलडम छोड़ दो।
तभी जाके कृष्ण प्राप्ति होगी। अगर ये कृष्ण प्राप्ति करनी है तो भेदभाव रहित रह के आध्यात्मिक जीवन का विकास करने में ऐसे जीवन के सिम्टम्स लाइए जहां पर आप नारद जैसे बने, प्रभुपाद जैसे बने, वर्तमान आचार्यों के जैसे बने, जो इन सब चीजों से दूर हैं। प्रभुपाद जी के चरित्र को देखिए, ध्यान से सुनिए। आगे एक और श्लोक है, बताऊंगा वो, मगर प्रभुपाद जी के चरित्र के देखिए, उन्होंने शिष्य किनको बनाया? जो मदिरा पान करते थे, व्यभिचार करते थे, गांजा लहसुन वगैरह खाते थे, दारू पीते थे। ये संभव कैसे हुआ? इन्होंने प्रगति कैसी की? ध्यान से सुनो आप। What is that which made the Western devotees completely surrender to Prabhupada, and they emerged successful on the path of devotional service without any discrimination, without any sectarianism, without any contamination? Why? Because the moment they came in association with the transcendentalists, whatever transcendentalists said, they did it. And they perfectly served Prabhupada so nicely, without kintu parantu. The way Prabhupada ji taught them, they accepted it as it is. And that is how they could give up that nonsense what they were doing in the life. They could give up the nonsense and they've emerged wonderful devotees. And that is Guru Nishtha. श्रीमद् भागवतम के इसी प्रसंग में आगे चल के नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं गुरु की महिमा क्या है और उसकी संबंध के अंतर्गत जीव कितनी प्रगति करता है। तभी असली प्रगति करता है जब उसकी जीवन में गुरु निष्ठा होगी। अगर गुरु निष्ठा नहीं है तो सब डगमगा जाएगा। इसलिए when you come under the shelter of a Krishna, when you execute devotional service very nicely, then you get what you want. You see? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठते ब्रह्मण्य सर्वभूतानि. Prabhupada ji is giving this reference of the shloka very, very nicely. In the purport of this shloka, he is giving the reference of this shloka. Why he is giving? So why? The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wandering of all living entities who are seated as on a machine made of a material energy. ये जो आत्मा है हमारे शरीर रूपी मशीन में बैठा हुआ है, जैसे भगवत गीता के दूसरे श्लोक में बताते देहिस्मिन् था देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तुत्र न मोहिते. धीरस्तत्र न मोहिते, जो इन शरीर के विकारों से पृथक है, जो जानता है कि मेरे अंदर में आत्मा और परमात्मा का वास है, उसको जानने के अंतर ही आपके शरीर के सुख भोगने की लालसा खत्म हो जाती है और आप अपने संबंध को ठाकुर जी के साथ सही स्थापित कर पाते हैं. तो यहां पर इसलिए बता रहे प्रभुपाद जी उस परपट में बता रहे अर्जुना अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट ऑल इन ऑल. After giving completely Bhagavad Gita to Arjuna, he could understand that he is not all in all. We must understand that we are not all in all. We don't know anything. We are all completely surrendered under the shelter of the Lord only all the time. But what makes you to be so arrogant? What makes you to be blasphemous? What makes you to think that you are the Karta? It is because you are completely on ignorance, because you are under the influence of Rajogun,
tamogun and satogun. And when you come under the shelter of your spiritual master, all these three things will vanish and you will become the servant of your spiritual master. And when you become servant of spiritual master, you ought to become the devotee of the Lord. You will become the devotee of the Lord when you can see the comparison. When you see a drunkard, when you can see a womanizer, when can you see so many other people becoming devotees? Just simply they came in contact with Prabhupada, and you are very fortunate. You are staying in Bharat Varsha, and it is said, Bharat Bhumi to hola janam jar janam sagarthak kari karo paropakar. जो भारत का बाशिंदा है उसको तो और भी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी भारत का है वो बड़ा भाग्यवान है। मगर अपने कर्मों के हिसाब से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुआ, अपने कर्मों के कारण तुम क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ, अपने कर्मों के कारण तुम सिख में पैदा हुआ, और अपने कर्मों के कारण तुम हिंदू के घर में पैदा हो गए। और जहां पर भी तुम हो उसके आधार पे तुम्हारा जो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है आदमी जो है वो कार में बैठे या प्लेन में बैठे, तो प्लेन में बैठने वाला व्यक्ति जो है जल्दी पहुंचता है। इसी तरीके से गुरु की आश्रय लेने वाला व्यक्ति भगवान के धाम जल्दी जाता है। सड़क पे जा रहा होगा वो कहीं, ये तो बड़ा लॉजिक है, सही पे। अब कार में जा रहा, प्लेन में जा रहा, प्लेन वाला जल्दी पहुंचेगा ना। इसी तरीके से जो गुरु के आश्रय में जाता, तत्वदर्शनी के आक्रोश में जाता है और अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करता है, वो जल्दी भगवत धाम जा सकता है। बाकी मंडराते रहते हैं यहीं पे। They keep on loitering in this material world under different cycles, under different modes, under different species, and they keep on suffering in this material world. That's why we have come into this material world. We are suffering. Nobody can say that I am happy. Janam mrityu jara vyadi dukh doshana dosh. This is all happening. But फिर भी पता चला, मोबाइल लाया, मैं बहुत खुश हूं। एक बेडरूम का हॉल ले लिया, हाय स्वामी जी मेरा बहुत अच्छा घर है, आइए मेरा घर है, खुश हो गया। ये सब खुशी चंद रोज दिनों की है, फिर अंधेरी रात। भौतिक वस्तुओं को कितना भी अपने गले से लगाओगे फिर भी तुम खुश नहीं हो सकते हो। तुम अपने पुत्र को क्यों ना एकदम सुबह से शाम तक चाटते रहो, मगर तुम अलग हो, तेरा पुत्र अलग है। हा? तुम अपना भोग रहे हो, वो अपना भोगेगा। तुम अपना खुशी करो, तुम अपना देखो कि कैसे मेरे को भक्ति करना। That's what is written here. Living entities get what he deserves. When the living entity is placed in a particular body, he acts accordingly. A person, one should not think himself independent at all. कभी भी हमें भगवान से स्वतंत्र अपने आप को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे कार्यों को उपदृष्टा हनुमंता हमेशा हमारे सभी कार्यों में निरीक्षण करते रहते हैं और उसी के आधार पे हमें रिजल्ट देते हैं। दिस वी मस्ट नो वेरी क्लियरली। एंड एट द एंड, इसी श्लोक के बाद में जहां पर प्रभुपाद जी ने रेफर नहीं किया है, भागवत गीता में, त्वम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानं प्रप्यासि शाश्वतम। If you want eternal happiness, if you want real happiness, Krishna is telling him to Arjuna, तुम भगवान की शरण चले जाओ।
जो संपूर्ण रूप से भगवान के शरण में चला जाता है, उसको कभी किसी का प्रॉब्लम नहीं होता। इज फ्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी, बिंदास बन जाता है। स्वयं भगवान भागवत गीता के 18वें श्लोक में 62 श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं, जो मेरे शरणागत, जो भगवान के शरणागत आता है, उसको कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। And then it is also said in the Srimad Bhagavatam, you see, it is said in the same. Actually, the suffering of being blasphemed and the enjoyment of being praised, the acceptance of good, welcome or of chastisement or by harsh words are felt in the material concepts. जो भौतिक स्तर पे होता है, उसी को ये ऑनर डिसऑनर लगता है। अरे मेरे को आज 4 चपाती नहीं दिया, क्यों ऐसा किया? हाँ, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को मंदिर में आके गालन नहीं डाल दिया। यही तो भौतिक संसार की परिभाषा क्या है? ऑनर डिसऑनर, मैं उधर गया था, मेरे को स्टेज पे बुलाया नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। महिलाएं जाती हैं, अरे मैं तो अपनी उधर गई थी, वहां पर मेरा ध्यान नहीं दिया, मेरे को साड़ी नहीं दिया, सबको साड़ी दिया, मेरे को नहीं साड़ी दिया है। बस ऐसे ही है, ये छोटे छोटे चीजों में हम उलझते हुए रह जाते हैं। हम असली जीवन का विकास नहीं ढूंढते हैं, हम लोग भौतिक चीजों का विकास ढूंढ रहे हैं और अपने निजी गोल को नहीं प्राप्त करते। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, रजस तमश्च सत्वेन सत्वं चोपासमेन च एतत् सर्व गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जायते। युधिष्ठिर महाराज नारद जी से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नारद जी बता रहे हैं उनको आगे चल के, कल्चर्ड ह्यूमंस कैसे रहते, what is the characteristics of a cultured person? There is a cultured behavior, instructions for civilized human beings. Afterwards we will read it. But this shloka is very, very important, where Yudhishthira Maharaj is, seeking this transcendental knowledge from Narada Muni, and Narada Muni is saying, one must conquer the modes of passion and ignorance by developing the modes of goodness, and then one must become detached from the modes of goodness, and then he should be promoted to the Vishuddha Sattva platform. And this can only happen, all that is automatically going to happen simply once you take the plunge and serve your spiritual master very, very nicely. केवल गुरु की चरणार विंद को भजने से ही त्रिगुणात्मक शक्ति को पार करके गोविंद के चरणों में पहुंच सकते हो। मगर हे मन, ये मानता ही नहीं। विषयों में पड़ा हुआ मन भ्रमित हो जाता है। आगे चल के इस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे कि भगवान जो है ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य हैं, वो हमारी तरीके से बद्ध नहीं है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई उनको ब्लास्फेम करे या कोई पुष्प चढ़ाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मगर हमारी भलाई इसी में है कि हम भगवान के भक्त बने। तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते। ये हमारी इसमें भलाई है कि हम भगवान की सेवा करें, अच्छे भक्त बने और नित्य निरंतर अपने विकारों पे दमन करते हुए भगवत भक्ति में आगे बढ़ें। ये तो उन पे छोड़ें कि शिशुपाल को गले लगाना है या दंतवक्र को गले लगाना है, मगर भक्तों के तो वो प्रिय है ही। इस पे हमें विश्वास होना होगा और रखना होगा। तो आगे चल के यहां पर प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि
Lord is very kind to his so-called enemy, because one who always thinks of the personality of God as an enemy also, he also gets benefited. Because even if the enemy is thinking all the time about Krishna, he's my enemy, then Krishna gives him also special mercy. Putana, she came with a kalakut on the nipple of her breast. But Krishna gave him adhikar of calling mother. Who can do that? It cannot happen on a materialistic platform. It can only happen with Krishna only. Krishna can benedict such type because he is Bhavagrahi Janardhana. He doesn't see how much tokri bada leke aaye. बड़ा टोकरी लेके भगवान में आप भगवान को रिझा नहीं सकते भाई, मगर वो रिझ सकते हैं अगर शबरी का बेर भी वो काट काट के खिला देगी तो भगवान बोलता नहीं है कि ये मेरे को जूठा खिलाया। शबरी का कटा हुआ बेर भी शबरी को मुक्त कर देता है। इसी तरीके से जो है कालकूट लगा के पूतना भी अपने कृष्ण को से मनवा दिया कि ये पूतना भी मां है, ये कृष्ण है? ये साधारण पुरुष नहीं है, आप और हम जैसे नहीं है, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस कृपा को समझना होगा और जानना होगा, तब जाके हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। Anybody has got any prashna? Please, time is running out. Tell me. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna. In front of all the sages and everybody, he entered into the body of Krishna. But later on, Prabhupada says in one of the purports that he was staying in the abode of the Lord as an individual devotee. So, because it's up to the Lord, what type of a thing he will like to treat us. You know, like you cannot inquire from Krishna, why did you give so much importance to Putana when she came to give you poison and she smeared the poison on the nipple of the breast, and how did you give them? It's up to Krishna. It is up to Krishna because he is Swarat, he is independent, he is not controlled by our whims and fancies. He is the Supreme Personality of Godhead. Like that, he may benedict something to somebody, it's up to him. But this is all in the Leela, because we know that they were not ordinary people, they were gatekeepers they were devotees. They were already devotees. We are not already devotees. We have not transcended the modes and material nature. We cannot compare ourselves to even Shishupal and Dantavakra, because they are coming as a role, they are playing a role so that, Krishna can be, he can play with the demons so that they can see that how Krishna is so powerful. Any more questions? Yes. Because in this material world, everything is imperfect. Everything in the material world is imperfect. Somebody may come
You may be walking on the Central Park, somebody will come to you. This is rose for you. And you may get impressed by the boy. Oh, this boy is bringing me a rose. He must have everything for me. But it's all imperfect. It's completely lust. Because this is imperfect Jagat. In this imperfect Jagat, we cannot ask for perfect situations. It is all. The abode of the Lord is perfect. The Lord is perfect. We are always imperfect because we are Baddha Jivas. Baddha Jivas have got a lot of trutis. What are the trutis? Imperfect senses, cheating propensity, illusioned. रात को देखा चलते चलते पता चला रस्सी है तो समझ गए उसको सांप है. तो यही चीजें हैं हमारे जीवन में. Under this influence, we cannot understand the Supreme. And that is why Lord is so kind. Lord is so kind, He has sent us the spiritual master who can help us to dissipate this ignorance and go back home, back to God. And that's why devotee is very different. And Lord's representatives are very non-different from Krishna himself. But they understand who is Krishna very perfectly, and they never call themselves as Bhagavan, and they're always subservients, and they are devotees of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hare, Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hare, Govinda Jai Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Gaurani Jai, Gaurani Jai, Gaurani Jai, Jai Gaurani Jai. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Jai Prabhupada, 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 Gurudev. So this was for those people who came late, and I request them, next Sunday don't come late, come in time, so that you can also be in Harinam Sankirtan, because this is the Yuga Dharma. In the Sankirtan only you can transform your life. So at least when you are coming for Bhagavatam class, see that you come on Sunday, 7 o'clock, 7:15 here, and you are sitting together. So it will give all of us good strength. And this is my humble request. And second thing is on 14th, on 18th. So on, today is 15th. So so today is 13th. Okay. So 15th is Ekadashi, that is 14th. That is tomorrow is Ekadashi. So please come for Ekadashi also tomorrow to Mangalarti. And this will benefit you immensely, especially coming on Ekadashi day in the Mangalarti at 4:30 will really, really help you. How many people will like to come for tomorrow's Mangalarti? आहा, बाकी लोगों का क्या नानी अभी है? Huh? So this is why we would like to say that tomorrow you can come to Mangalarti, and then you want to go back, and you can go back before that. But if you want to stay back, then you can have Ekadashi Prasadam also with the devotees. Am to am gutliyon ki dam. Isn't it? And then we have on 18th Gaur Purnima. So please, everybody should come again on Gaur Purnima also. Mangalarti में सभी आए और उस मंगलारती में आप प्रस्तुत रहें और फिर शोभा यात्रा में जाना है। 2-3 साल के बाद में हम लोग सड़क पे जाएंगे शोभा यात्रा करने के लिए। और तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपा करके आप आइए। गौर पूर्णिमा के दिन हम शोभा यात्रा 6 बजे निकालेंगे और जितनी संख्या में हम सब होंगे उतना आनंद आएगा और उतना गुणगान होगा प्रभुपाद जी का, उतना गुणगान होगा राधा मदन मोहन जी का, श्री गौर निताई भगवान का, और असीम कृपा सभी के ऊपर पड़ेंगे हरिनाम संकीर्तन के साथ। और फिर आप सबको बता दूं 2 और 3 तारीख को श्री राधा मदन मोहन जी का 13वां एनुअल फेस्टिवल है। ओके, 13th annual festival, Saturday and Sunday, and we'll be having a special blessings from senior devotees. His Grace Bhima Prabhu will be giving on Saturday a lecture on Gudi Padwa Day, and then Gopal Krishna Maharaj will be here for 2 days. He will also give a lecture at 5 o'clock on the Gudi Padwa Day.
5 to 6, and then 6 o'clock there is going to be an abhishek. This time we are having abhishek in the evening, because I know we are all body conscious. कभी गर्मी ज़्यादा लगती है तो एक दूसरे को बोलते हैं अरे बहुत गर्मी है, तो हम लोग दिन में कैसे जाएंगे, तो इसलिए हमने शाम का कार्यक्रम रखा हुआ है सैटरडे को। तो 6 बजे अभिषेक होगा, तो आप ज़रूर आइएगा, और उस दिन भी बहुत अच्छी तरीके से प्रसाद पाइए। और 7 तारीख को, मतलब सॉरी 3 तारीख को यज्ञ होगा स्पेशल, वरिष्ठ इम्पोर्टेंट लोगों के लिए जो हमारे डोनर्स हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। तो 108 फैमिली स्पेशल यज्ञ कुंड में संडे को बैठेंगे 10 से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद में 12:30 आरती होगी और 1 बजे सबके लिए प्रसादम होगा। और सभी जितने भी कॉन्ग्रेगेशनल डिवोटीज हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप सेवा में रहें, तत्पर रहें। जो भी आने वाले अतिथि हैं उनको आप प्रसन्न करें अपनी भावनाओं से, अपनी भक्ति से और अपने समर्पण से, और उनका अच्छी तरीके से देखभाल करें, ताकि ये एनुअल फेस्टिवल है हमारा। एनुअल फेस्टिवल में जितने भी भक्तगण आएंगे, हजारों भक्तगण आए, उनको हम लोग प्रसाद कराएं, कृष्ण नाम जपवाएं, और पूरा दिन उस दिन सैटरडे को पूरा कीर्तन रहेगा। और सभी जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, कामोठे में हैं, कलम्बोली में हैं, पनवेल में हैं, उल्लासनगर में हैं, वो सब पूरा दिन यहाँ पर 2 दिन कंटिन्यूसली कीर्तन करेंगे। और आपको बड़ी खुशी होगी कि गौर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर हमारे भक्तगण बहुत ड्रामा कर रहे हैं। वैसे तो करते ही रहते हैं, मगर वो विशेष ड्रामा होगा। विशेष ड्रामा क्या है? और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के पे स्पेशल उनकी पास टाइम्स पे वो ड्रामा बना रहे हैं। लगभग 1 घंटे का ड्रामा है, और उसका भी रसास्वादन गौर पूर्णिमा के दिन होगा। ये ड्रामा केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होगा, गौर निताई जी को प्रसन्न करने। बाकी तो मैंने देखा नहीं, उस दिन मैं देखूंगा वो ड्रामा। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, निताई गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, बोलो आप सब की, गौर प्रेमानंदे।